everyone. Welcome to our special session, the final countdown to CLAT. I'm sure in these last 15 days, you must have a ton of questions and a lot of stress about the upcoming examination. So today, to address these questions, we have on our panel 3 members of our CLAT mentors. Firstly, Mr. Bhavtosh Agrawal, with about 10 years of experience, Mr. Ritesh Agrawal, with about 12 years of experience, and Mr. Shiprak Khandal, with about 8 years of experience. The CLAT exam is right around the corner. And apart from the questions that you have about what to do and what not to do academically, you must be dealing with a lot of anxiety about the exams. It's not easy, you've been preparing for months. So my first question, Bhavtosh sir, is that how do you deal with this anxiety and stress of the upcoming examination? See, first of all, I would like to say that the students must have faith in their preparation. उनको ये मानना होगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी उन्होंने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं. नाउ दे नो अबाउट देयर वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ. तो अब ये जो टाइम है ये आपको यूटिलाइज़ करना होगा. इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा कि द प्रिपरेशन, द मटेरियल इज़ ओवर एंड नाउ इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर मेंटल स्टेबिलिटी. कि जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे 2 घंटे आपको अटैम्प्ट करना है पेपर, उस टाइम पे आपका जो अप्रोच है वो किस तरीके का होना चाहिए, that is something that needs to be developed right now. So I would simply say that now is the time to maintain your confidence and patience level so that you can attempt the paper very well. Correct. Thank you, sir. Thank you very much. Given that there are a few days left, Shiprak sir, what do you think would be your suggestion for the students to do or not to do in these final days? Okay, so considering the fact that they only have some 15 days left around this time, so one of my biggest advices would be focus most of your time on GK and legal, considering the fact that more than 50% of the weightage in the exam itself belongs to GK and legal. Right. And सबसे अच्छी बात GK और legal की ये होती है कि करना आसान होता है उस पे काम, especially short time के अंदर. When you don't have that much time, तुम सबसे ज़्यादा उसके ऊपर focus कर सकते हो. So as a result, I would suggest that most of this time should be dedicated to GK and legal. That's right, sir. Absolutely. Since the weightage for these 2 sections is immense, let's move to Ritesh sir and ask him what your suggestion would be to the students to prepare for the exam for GK section specifically. Good question, ma'am. So for GK, my first advice would be not to learn anything new. Okay, there is no need to gain any new information in the last 15 days. This is the time to consolidate what you have done in the past 10 months or 6 months of your preparation, and to revise your notes. So what is being asked for? You are being asked current affairs for last 12 months. आखिरी 12 महीने के current affairs आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है. इवन अगर आप एक दिन, एक महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए लेते हैं, यू कैन गेट ऑफ विद इट इन द नेक्स्ट 12 डेज. करेक्ट. ओके, तो 12 दिन के अंदर आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप टॉपिक वाइज स्टडी करें, पिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल स्पेयर्स की बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट लेट्स से ईरान क्राइसिस, लीकेज इन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस, आप बात कर सकते हैं अजरबैजान अर्मीनिया क्लैश की, आप बात कर सकते हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है. अगर हम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में बात करें, लेट्स से बिल्किस बानो केस के बारे में आप बात कर सकते हैं, या राजीव गांधी कॉन्विक्स केस के बारे में बात कर सकते हैं, या EWS कोटा के बारे में बात कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज किया जा सकता है, जैसे अग्निपथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड लाइन्स पर हैं. आप एनवायरमेंटल इशूज़ पे बात कर सकते हैं, वो दे आर क्लैट कंसोर्शियम फेवरेट्स, तो आप बात कर सकते हैं COP27 समिट के बारे में, आप बात कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में, ठीक है. तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगी और आप काफ़ी हद तक 360 डिग्री जिसे हम कहते हैं वे ऑफ प्रिपरेशन, उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी मॉक्स में 25+ स्कोर कर रहे हैं GK सेक्शन में, तो आपको कुछ ड्रास्टिकली अपनी तैयारी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जस्ट रिवाइज. लेकिन अगर आप लेट से फॉल करते हैं 20 to 25 के ब्रैकेट में, तो मेरा सजेशन ये है कि रैंडम रिवीजन के बजाय आप टॉपिक बेस्ड स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें. हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी शेयर करेंगे, तो यू कैन रेफर टू द सेम. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स, ठीक है. देखो, जब तक मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या होगा कि आपने याद तो बहुत कुछ कर लिया, बट क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है. तो मेरी सजेशन यही है कि आप रिवाइज करने के साथ साथ एटलीस्ट प्रैक्टिस 1 मॉक डेली फॉर द GK सेक्शन.
I think that will be all. Thank you, sir. That's very helpful. And now that we've covered the GK part, my question to you, Bhavtosh sir, is that the same. How do you think they should strategize their study in the last few days? So, if I talk about legal section in particular, in the last 15 days, there is not much to do, to be very honest. लेकिन ये जो प्रिपरेशन है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी. सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई स्टूडेंट मॉक्स में 27 to 32 मार्क्स स्कोर कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहेगी. और कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसके मार्क्स लीगल सेक्शन में 27 से कम वो स्कोर कर पा रहा है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहेगी. बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू बीन स्कोरिंग बिटवीन 27 to 32, आई वुड से दैट यू डोंट नीड अ कंप्लीट रिविजन. बेसिकली 27 to 32 इज़ अ गुड स्कोर. अगर आप लीगल में कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर है. उस केस में आपको एक कंप्लीट रिविजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फोकस ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पहले एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि फ्री कंसेंट एक टॉपिक होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है. ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करेंगे, somebody who has been scoring well, तो उसके लिए ये selected revision काफ़ी ठीक रहेगा. On the other side अगर मैं बात करूँ for somebody who has been scoring below 27, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी. वहाँ पे आपका स्कोर शो कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो वहाँ पे ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी. इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप कंप्लीट रिवीजन एक बार कर लें तो बेटर रहेगा. अ थरो रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, वेदर फ्रॉम स्टैटिक लॉ, criminal contract and tort and constitution, and from current legal affairs as well. तो ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिपेंड करेगी इस बात पे कि आपका स्कोर करंटली मॉक में क्या चल रहा है. Right. Thank you, sir. Now that we've covered 50% of the paper, I would like to ask you, Shiprak sir, what about the other sections, for example, English? Okay, so I would actually like to talk about English and critical reasoning together. The primary reason being that when you look at both of these sections at the present moment, like since the pattern changed a couple of years ago, they are both very, very similar. Like when you look at the questions posed in both of them, I think a true CR question is only there, like I think one out of 5 in the CR section. Otherwise, everything else is pretty similar to the English section. So, इस चीज़ को नज़र रखते हुए, I would really suggest focus on the reading right now. As Ritesh sir previously said, कुछ नया मत करो इस time पे. Like focus on everything you've already done. Revise all the words that you've already gone through. Maybe you talk about tonal words, or you talk about your literary devices, or any kind of words you've gone through. Don't do anything new. Revise and stay in the habit of reading, because reading is your best friend in this entire examination. I think that's a very valid point. That's very true. Right, right. But now that you've brought up reading, I want to point out that it's quite tedious and monotonous, and I think we'd all agree that there is a lot to read in the CLAT paper. So students tend to burn out, and the words don't make sense after a point. So what do you think they should do when such a thing happens during the paper? So that's actually a very great question. A lot of students do face this problem that while you're reading something, you face this burnout कि अच्छा fine, मैंने इतना पढ़ लिया कि मेरे को words समझ में ही नहीं आ रहे हैं. So in that particular case, I would really genuinely request the students to maybe have a look at your strategy once. Like don't feel confined to the sections of the examination created by the consortium. ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा English section एक बार में solve करो. You can jump ahead. Maybe you've solved 2 passages. You feel like, अच्छा fine, मेरा mind अब थोड़ा सा overwhelm हो रहा है. Right. Go to the GK section. Maybe solve 10-15 questions, then come back. Or you can also go to the math section, or you can go to the analytical reasoning section if that is there. That is, all of these sections are great things to just give you breathers. Relax. Don't finish the entire section in one go. कोई ज़रूरी नहीं है. For that matter, I would actually extend this piece of advice to not just English but also to critical reasoning and legal, because I think legal maybe they have very lengthy passages. Break from reading is absolutely important. Absolutely. Yeah, and apart from time management, I think it's also about mind management. Absolutely. The general tendency is that they will finish one section in one go, and that will burn them out. So that is a very bad approach. I don't think any student, even if you think that English is your strong suit, I really don't think that you should actually follow that approach. That's a great piece of advice, actually. Thank you. And you have brought up that they should switch to quant and AR. So the students' concern is that they are terrified of that section usually.
And we have seen that there is a general tendency to actually skip it altogether, since there are a limited number of questions and they don't associate that importance with it. So what do you think, sir? Is it really not that important? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जनरली जो टेंडेंसी है स्टूडेंट्स में वो क्वांट सेक्शन को इग्नोर करने की है, बिकॉज दे रॉन्गली बिलीव कि क्वांट सेक्शन का वेटेज कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू गो टू द लॉ स्कूल ऑफ देयर ड्रीम्स. अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है. तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्री कंसीव नोशन के साथ आपको क्वांट अटेम्प्ट नहीं करना है. जनरली जो देखा गया है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन होता है कि क्वांट इज़ अ डिफिकल्ट सेक्शन, मुझसे नहीं हो पाएगा. मे बी बिगिनर लेवल से उनका वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता है. सो दैट्स द रीज़न दे ट्राई टू इग्नोर द सेक्शन. लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है. आई मस्ट से कि किसी भी स्टूडेंट को अगर टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांट सेक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर्स शॉर्ट होते हैं. अगर आप बात करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन में जैसे आरसी होता है या लीगल रीजनिंग में जो पैसेजेस होते हैं, वहाँ पे आंसर्स कभी कभी सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाया था और उस पर्सपेक्टिव को आप नहीं अगर आइडेंटिफाई कर पाते तो आंसर्स गलत हो जाते हैं. लेकिन क्वांट सेक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं होता है. अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर पॉसिबल होता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक्स, ऑन द फैक्ट्स एंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, पूरा फोकस लेके चलना है. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू हैव अ ड्रीम ऑफ गोइंग टू अ गुड लॉ स्कूल, quant section is absolutely critical, crucial. Right. So it will give you that edge over the other aspirants Absolutely. and help bridge that gap of those few marks. Absolutely. Right. Because काफ़ी सारे बच्चे quant section को छोड़ते हैं, उसमें गलतियां करते हैं. अगर आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे और आप गलती नहीं करेंगे तो डेफिनेटली you are in a better position. Absolutely agree to that. And now we know that it is quite an important section to get that edge. What do you suggest, or what is an ideal score that they should aim for in this section? Okay, so primarily, as like Bhavtosh sir said, like great point, that a lot of students have this tendency that they just ignore the section altogether, which is a horrible decision, by the way. Like 15 marks just down the drain in one go. Correct. Like doesn't make any sense. And if you actually try to attempt it, like considering the fact that mostly the CLAT paper, like it's generally like easy to moderate, like, and even if let's say like all Generally, the questions, yes, generally like even when all the questions are let's say on a moderate level, in I think 13 to 15 minutes you can easily score some 10 to 12 marks. Definitely. Which is a given thing as long as you attempt it. And in case and if by any chance you get some easy questions in the entire lot, you can even score I think like some good 13 to 14 marks like within the same span of time. Correct. And it's just a very silly decision that like you don't even try to attempt it, because I understand that a lot of students have this phobia when it comes to mathematics, but you don't have to be like, even if you don't cover the entire syllabus, maybe prepare a few predominant topics. Like if you can't score 10 marks, it's okay. Score 6 marks, score 7 marks. And there's no higher maths involved. I mean, yeah, it's pretty absolutely. elementary. There is no calculus, no differentials, nothing like that. It's all elementary mathematics. So maybe score like at least 6 to 7 marks if nothing else. So that I would genuinely and request the students, like make sure you don't just leave the mathematics portion. That is very, very integral, especially when you reach that higher place जहाँ पे स्कोर्स टाई अप हो रहे होते हैं सबके, एंड वो 5-5, 6-6 मार्क्स में आपके 4-4 कॉलेज can create a difference. Massive difference. Absolutely. Absolutely. All that you can do if you're not good at maths also, attempt a few topics that you're comfortable with. Absolutely. That's like a good maybe advice. percentage, profit and loss, some questions which are asked very often. Something that you're Absolutely. already good with. Absolutely. Right. Absolutely. And you've spoken about time management with this section, and there is obviously a time crunch that is involved. There is a finite number of questions and limited time. So what's an ideal time to approach the GK section? See, with GK you definitely have an advantage. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, या तो आपको सोल्यूशन आता है या नहीं आता है. ठीक है, सो यू कैन गेट इट डन यू नो इन आइडियली इन 10 मिनट्स. ठीक है, आइडियली 10 मिनट के अंदर आपका जीके सेक्शन आप कंप्लीट करके निकल सकते हैं. बट इफ देर आर मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, इफ दैट हैपन्स देन यू कैन ऐड 2 to 3 मिनट्स. ठीक है, so ideally 10 to 12 minutes you should be fine with the GK section. So sir, the same question for you as well that I put up for Ritesh sir. Since the legal section is a little lengthier, how do you think they should approach it? What should be the ideal time to do it? Well, the ideal time I would say is 30 minutes. लेकिन ये सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वली अप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं. अगर किसी स्टूडेंट ने 5 से 6 पैसेजेस अटेम्प्ट कर लिए हैं इन द फर्स्ट 30 मिनट्स
और अगर उसको पेपर के बारे में अच्छी फीलिंग आ रही है इन द सेंस इफ़ ही इज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑफ द अटेम्प्ट्स मेड सो फार, तो वो एडिशनल 10 मिनट्स वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कैन मेक इट टू 40 मिनट्स. लेकिन इफ़ अ स्टूडेंट पर्टिकुलरली फील्स दैट इन द 5 to 6 पैसेजेस ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है, अटेम्प्ट्स ठीक से नहीं गए, प्रॉब्ली उनको एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही अबाउट द सेक्शन इन जनरल, देन आई वुड से दैट ही मस्ट वाइंड अप द सेक्शन इन द नेक्स्ट 2 to 3 minutes. So the ideal time stays 30 minutes, but you can extend it up to 40 minutes or maybe next 2 to 3 minutes, depending completely on the conditions that we just discussed. So it's a momentary decision, I must say. Depending on how you have done the rest of the Absolutely, paper yes. and everything. Right, absolutely. So what about analytical reasoning? 2 points. A, don't rule them out. CLAT consortium has an habit of throwing surprises. Right. ठीक है, तो just because कि previous years में नहीं आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल नहीं आएंगे. Second, focus on easy to moderate questions. आप puzzles पे focus कर सकते हैं. Right. आपके जो भी topics आपने पहले classes में किए हैं उन पे focus कर सकते हैं. Okay, so don't rule them out. There might be 5 easy marks up for grabs. Okay, thank you so much, sir. And I believe we've covered a lot of the doubts that Right. the students Yeah. might have. Absolutely. So just to wrap this session up, as our mentors have stated, practice a lot of mocks, don't try to grasp any new information, and take care of your health. Go out, get some physical activity as well, and just keep yourselves calm, and all the best for your exam. For more discussions, more information, follow our Telegram channel and stay tuned. Thank you.